Good afternoon, students. So this is your English class. So be ready with your copy. As you all know, yesterday we studied about nouns, right? हमने कल क्या पढ़ा? Nouns के बारे में, right? We understood what nouns are. क्या nouns क्या होता है? वही हमने कल पढ़ा. So let me revise before starting today's class. Let me revise with what nouns are. Okay? Nouns का definition हम पहले देख लेते हैं. So नाउन का डेफिनेशन क्या था? नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड naming words are called noun, right? So everybody write it down in your copy. The definition of noun. सब लोग अपना कॉपी में लिखिए नाउन का डेफिनेशन. तो नाउन्स क्या है? नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड nouns, right? और nouns को हम क्या बोल सकते हैं? It is a name word, right? It names a person, नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग. सो एक बार मैं फिर आप लोगों को नाउन के बारे में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? तो नाउन क्या है? फर्स्ट डेफिनेशन, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. ओके? And name, it names a person, place, animal and thing. किसी भी person, place, animal, thing को जो define करता है उसको हम noun बोलते हैं. Understood? So आप लोगों को मैंने कल एग्जाम्पल्स देखकर ये नाउन के बारे में अच्छे से क्लियरली बताया था ना. So today what we are going to do is we are going to do some exercises related to this topic. Okay? So ये आप लोग को कॉपी करना है as a homework. And the question is, क्वेश्चन क्या है? Circle the noun in each sentence. Okay. So जैसे कि हमने कल पढ़ाई है नाउन के बारे में,
So the question says circle the noun in each sentence. क्वेश्चन का मतलब क्या है, हमको सेंटेंस में क्या क्या ढूंढना है, नाउन को ढूंढकर उसको क्या करना है, सर्कल करना है. अंडरस्टूड? सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज likes to eat chips. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, she likes to eat chips. So everybody write it down in a copy. So इसका आंसर क्या होगा, इसमें कौन है, कौन सा नाउन है, बताइए मुझे कमेंट में. Pratik, yes, tell me the answer. Only Pratik is there. Tell me the answer. So, इस सेंटेंस में the answer is, first read the sentence carefully, okay? Yes, very good Pratik. Chips. Chips is the correct answer. Very good. Only Pratik is attentive. No one else? The correct answer is chips. Right. You have to circle chips. Okay? यहाँ पे क्या है? Chips एक noun है. Why? Why it is a noun? Pratik, give me the answer. Why it is a noun? Why chips is a noun? Chips is a noun because it is a word given to a, it is a name given to a thing, right? चिप्स क्या है, एक नेम जो कि एक चीज को दिया गया है, राइट? So let's jump into the second question. My mother cooks my mother cooks food. So what will be the answer? Tell me in the comment. नंबर 2 का आंसर क्या होगा, बोलिए मुझे कमेंट में. Pratik, give me the answer. They words, yes. क्या होगा? Yes, very good Pratik. Chips is the answer because it is the thing, right? Chips is a name given to a thing. That is why chips is a noun. Very good Pratik. Yes. Good Aradhya. Yes. They was give me the answer for the second question. Second question का आंसर दीजिए मुझे. सेकंड क्वेश्चन में कौन कौन सा नाउन है, बोलिए. टेल मी देवर्स. आराध्या. लेट्स सी who will answer first. खाली आंसर नहीं देना है, उसको
राइट इट डाउन इन योर कॉपी एज वेल. ओके, आप लोगों को कॉपी में भी लिखना है इसका आंसर. ये सब. यस प्रतीक, वेरी गुड. मदर. The noun over here is mother and food. We have two nouns in this sentence. Okay. Number 2 sentence में हम लोग क्या है, हमारा दो nouns है. क्या है? We have two nouns in the second sentence. Okay. The first noun is mother and the second noun is food. Second noun क्या है? Food. So why mother is a noun? Can anybody tell me? Mother why? Mother को क्यों noun बोला हमने? Mother is a noun because it is a name given to a person. मदर क्या है? एक नाम जो कि एक पर्सन को दिया गया है. राइट. नाउ द फूड. फूड इज ऑल्सो अ नाउन. व्हाई? कैन यू गिव मी द आंसर? व्हाई फूड इज अ नाउन? फूड इज अ नाउन बिकॉज इट इज a name given let's wait for the system to reopen. तब तक आप लोग सब नंबर 2 का क्वेश्चन देखिए और समझिए व्हाई मदर एंड फूड इज अ नाउन. एंड नंबर 1 क्वेश्चन भी देखिए. तब तक आपने कॉपी में लिखा हुआ तो व्हाई चिप्स इज अ नाउन. सो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड क्वेश्चन. ओके, नंबर सेकंड का क्वेश्चन तो आप लोगों ने लिखा ही होगा ना. लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड क्वेश्चन. ऊपर का हेडिंग में लिख देती हूँ. सर्कल noun, circle the noun in each sentence. So as we have reached to the second question, now we move on to the third question. Okay, so everybody write it down. Food and yes, Pratik, very good. The third question is the boy kicked the ball. The boy kicked the ball. Now can anybody give me the answer for the third question? Tell me the answer. Yes. Very good, Pratik. Devars, Aradhya, give me the answer. Write it down in your copy as well. So the third answer will be boy and ball. These two are the nouns because boy boy
is a name given to a person, right? And ball is a noun because it is a name given to a thing, right? I hope आप सबने लिखा होगा number 3 का question, number 3 का sentence. Now let's jump into the fourth question. Okay, the fourth question says, sentence says, the cat is sleeping. Now viewers, give me the answer for the fourth sentence. The answer for fourth sentence is cat. Cat over here is a noun because it is a name given to an animal. Okay, cat क्या है? एक नाम जो कि एक एनिमल को दिया हुआ है. कैट क्या है? आप सबको घर पे आप सबने कैट को देखा ही होगा, राइट? So cat is a name given to an animal. So in the fourth sentence, cat, you found only one noun. कितना noun found मिला हमको? Only one, that is cat. Because dog noun नहीं है, cat है noun. He is also not a noun. Sleeping is also not a noun. Cat क्या कर रहा है? सो रहा है. Sleeping का मतलब सो रहा है, right? So let us try the fifth question, the fifth sentence. The fifth sentence we have is I have a ball. मेरे पास क्या है? एक ball. Now tell me which one is the noun here. Tell me in the comment. कौन सा है noun? प्रतीक, tell me. Give me the answer for the fifth question. I have a ball. Which one is the noun? So, ball is a noun. क्या है? Ball एक noun है. Why ball is a noun? Because it is a name given to a thing. Ball क्या है? एक नाम जो एक चीज को दिया गया है, right? So in the fifth question we found one noun, that is ball. So we write only one sentence, then I hope everybody is writing down in a copy. Now the sixth sentence is she drinks milk. So tell me which one is the noun here. Write it down in the comment. Which one is the noun? Yes, very good, Pratik. So milk over here is a noun. Okay. Why? Because it's a name given
टू अ थिंग. मिल्क क्या है? एक नाउन जो कि एक चीज को दिया गया है, राइट? सो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. विल कंटिन्यू दिस टुमारो. ओके, आई होप आप सभी ने ये 6 सेंटेंस अपने कॉपी में लिखा होगा. विल कंटिन्यू विद दिस टुमारो. ओके, नाउ गेट रेडी फॉर योर इंग्लिश क्लास. थैंक यू. Good afternoon, students. Everyone, take out your EVS copy. Okay. So now, everyone, take out your EVS copy. Today we are going to learn about rooms in a school. So in the previous class, as I already teach you, what is a school. पहले वाला क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे अपने स्कूल के बारे में. Our school. हम लोग क्या चीज के बारे में पढ़े थे? Our school के बारे में. So first I will revise this. Okay. So as I already told you that our school means हमारा school. So previous class में हम लोग पढ़े थे कि हमारा school. So why we all are come the school, otherwise coming the school. So school is a place where we can learn, read, write and many more things. Okay, school is the place. School एक जगह है जहाँ पर बहुत सारी चीजें सिखाए जाते हैं. For example, good manners, values and all. And school is the place where you can make a different friends. Okay, so today our topic is rooms in a school. So ये हमारे स्कूल में ही आएंगे. Say rooms in a school. So today our topic is rooms in a school. So let me tell you that in a school there are so many rooms. मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि in a school, एक स्कूल में there are so many rooms. But thing is that we are not know about the rooms name. हम लोग को नहीं पता है कि rooms का नाम क्या है. So यही आप लोगों को मैं पढ़ाना चाहूँगी. So number 1 में आएगा, look at here, see. Principals, room. Number 2, class room. Number 3 is room. Number 4, canteen. Number 5,
library, and number 6 is computer lab, computer lab. Okay, and number 7 is hall. So so look at here. So rooms in a school. So in our school there are so many rooms. First one is principal's room. Okay, and second one is class room. Third one staff's room, and fourth one canteen. Fifth one library. Sixth one computer lab. Seventh one is hall and auditorium. Okay, so see principal apostrophe s, principals are double o and room. So principal's room. Principal's rooms means what? In the principal's room there our principal ma'am is sit and functioning the school. So principal's rooms में क्या आते हैं? हमारे principals वहाँ रहती हैं and हमारे लिए and even all the students के लिए and teacher also see functioning our school. हमारे school को functions करती है. Even हम लोग को teach करती है how we can run the classes, how we can conduct the classes, how we can follow the rules regulations in the school. हम लोग को क्या करना है, कैसे करना है. Otherwise if sometimes we have a work, otherwise हमारे parents को अगर कोई work होता है so we will हमारे parents आते हैं चाहे हम ही लोग directly principal's rooms में जाते हैं so that we can meet our principal ma'am. Okay, second one is classroom. So say what is classroom? Classroom क्या है? Classroom is the room where students they can learn. Otherwise classroom is the rooms where teacher they can teach to the different students. Classroom एक ऐसा रूम है जहाँ पर सारे टीचर्स अपने बच्चे को स्टूडेंट्स को पढ़ाती है. So in a classroom, so as we know that in a school there are not only one classroom, right? एक स्कूल में बस एक क्लासरूम नहीं होता है. There are so many classes are there, and in all the classes there are so many different teachers and different subjects, and all the teachers they all are taking their classes in the classroom. Okay, and third one is staff room. So see STAFF, staff ROOM. So staff room is a room where teachers sit there and do their work. So staff room एक ऐसा रूम होता है जहाँ पर जो भी टीचर्स समटाइम when they are free, जब वो फ्री रहते हैं तो वहाँ पर वो जाके बैठते हैं and they can do their work. वो अपने काम वगैरह करते हैं. For example, correction the copy. Okay, for examples, they can make the lesson plan and all. Okay. Fourth one is canteen. So see students, in our school also there is the canteen. So सारे schools में canteens होते हैं. Canteens is a place where students they can buy something, otherwise they can sit there and eat their lunch, otherwise sweets and all. Okay. So canteens होते हैं जहाँ पर बच्चे कुछ buy करते हैं और खाते हैं. Okay. And next one is library. So in our school there is the library also. Library is the room where we find the collections of book. Library ऐसा रूम है जहाँ पर बहुत सारे बुक्स का कलेक्शंस होता है. Now you are all are in small kids. आप लोग छोटे बच्चे हो. This is the reason कि आप लोग को लाइब्रेरी में नहीं लेके जाया जाता है. But when you will pass out from the class 1 to automatically you get a chance to move over there. Okay. And sixth one is the computer lab. See, so computer lab is the room where
we will find that so many computers. So computer lab में computers रहता है and हम लोग practically computer का use करते हैं. How we can open the computer, how we can shut down the computer. Okay, but in class UKG there is no computer subject. So students, when you will pass out the class UKG, then when you will reach class 1 पे जाओगे तो आप लोग का कंप्यूटर सब्जेक्ट होगा. There you will get a chance to move in the computer lab. 7th is hall. So hall, otherwise the auditorium, where we can go for practicing and all, where we can go for assembly and all. So hall एक ऐसा रूम है, बड़ा सा ऑडिटोरियम हॉल है जहाँ पर हम लोग अपने प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, अदरवाइज असेंबली के लिए जाते हैं, अदरवाइज मीटिंग एंड ऑल आर गोइंग देयर. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस ऑल आर द रूम्स इन आवर स्कूल विच वी विल फाइंड. सो कभी भी आप लोग को कोई भी पूछे कि हाँ डू यू हैव कंप्यूटर लैब इन योर स्कूल, सो दैट टाइम आप लोग को बोलना है यस, in my school there are so many rooms. For example, principal's room, classroom, staff room, canteen, library, computer lab and hall. So आप लोग को बोलना है कि हमारे स्कूल में बहुत सारे रूम्स हैं, जैसे कि ये रूम्स का नाम लेते हुए. सो ये भी अब बहुत वो बात है कि आप स्कूल में पढ़ रहे हो, बट थिंग इज दैट यू डोंट नॉट अबाउट योर स्कूल. अगर आप लोग अपने स्कूल के बारे में पता नहीं रहेगा तो ये अच्छी बात नहीं है. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. सो इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन आप मुझे पूछ सकते हैं, सो डैट मैं आप लोग को क्लियर कर पाऊँ. Students, anyone have any problem, any questions, please ask me. आप लोग पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो. Okay, students. Okay, आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, इफ एनीवन हैव अ क्वेश्चन प्लीज आस्क मी, लेट मी क्लियर यू. आप लोग के पास जो भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हो. See, so now I will write a small sentence or definition so that you will clearly understand. अब मैं छोटा छोटा यहाँ पर आप लोग के लिए सेंटेंस प्रोवाइड करती हूँ सो डैट कि आप लोग इजीली इसको समझ पाए. ओके, सो फर्स्ट वन इज क्या है हम लोग का प्रिंसिपल्स रूम. सो व्हाट हैपेंड इन द प्रिंसिपल्स रूम? प्रिंसिपल्स मैम, PRINCIPAL apostrophe S, प्रिंसिपल्स मैम sits. Wait, okay, students. Principal's ma'am sits here. So what happened in the principal's rooms? Our principal's ma'am sits here. हमारे principal's ma'am principal's rooms में रहती है. Second one is classroom. So classroom is the room where children study. यहाँ पर क्या करते हैं? Students
students here. Okay, so classroom is the place where the students they can study here, and in this way third one is the staff room. Staff room is the room where teachers they can sit and do your work. Teachers, T-E-S-C-H-E-R, teachers sits here and do. Teacher sits here and do their work. Wait, okay. And okay, teacher sits here and do work here. Next one is canteen. Canteen is the place where children eat. यहाँ पर children and students C-H-I-L-D-R-E-N children eat or buy things here. Okay, and library is the rooms where children read books here. Students S-T-U-D-E-N-T-S students read books here. यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स होता है लाइब्रेरी में जहाँ पर बच्चे रीडिंग्स वगैरह करते हैं. एंड कंप्यूटर लैब में क्या होता है, स्टूडेंट्स लर्न करते हैं S-T-U-D-E-N-T स्टूडेंट्स लर्न L-E-A-R लर्न students learn to work on a computer, to work with students work on computer. Okay, and hall is the big room where different types of practicing is going on and even assembly is conducted over there, otherwise meeting and all is conducted over there. Okay, so I hope you all are student, you all are understands. One more time I will revise this lesson students. So पहले हम लोग समझेंगे what is school. So school क्या है, school is the place where we can study and learn many new things. स्कूल एक ऐसा जगह है जहाँ पर हम लोग स्टडी करने के लिए आते हैं, बहुत सारी चीज़ सीखने के लिए आते हैं. रीड एंड राइट, रीडिंग करने के लिए, राइट करने के लिए, इवन डिसिप्लिन, मोरल वैल्यू एंड गुड वैल्यूज all are being learned from the school only. So today our topic is rooms in a school. So rooms in a school is principal's room. So what happened in the principal's room? In the principal's room, principal's ma'am sits here. Okay, principal's ma'am यहाँ पर रहती है. If we have a work with principal's ma'am, you can directly go in the principal's room. Second one is classroom. The classroom is the room where students study. जहाँ पर students study करते हैं. Next one is the staff room, and staff room is that room where teacher sits and do their work. Next one is the canteen. Canteen is the place where you can buy the things, otherwise you can sit there and eat things. Next one is library. Students read books here. And sixth one is computer lab. Computer lab is the room where students they can learn how to work in a computer, work on a computer.
And in this way, last one is hall. Hall is the room, big room where assembly will be conducted, meeting will be conducted, and practicing will be going on. So in this way, today this much only. I hope you all are understand. आप लोग को समझ में आया होगा. If anyone have any problem, आप लोग मुझसे contact कर सकते हो बच्चे. Okay? So आप लोग इसको note down कर सकते हो. You have to not note down this all the things. You only note down the rooms in a school. For example, principal's room, classroom, staff room, canteen, library, computer lab, otherwise hall. Otherwise, you can take a screenshot so that later on you can copy from the phone. Okay. So this much for today, students. Thank you. Have a nice day. And your homework is please go through this topic and you have to remember. Okay. Thank you, class. Now your next class will be Hindi. Hindi teacher will take the class. Okay. Thank you, students. गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हिंदी क्लास में. ठीक है, चलिए कल हमने पढ़ा था एक की मात्रा. आज हम पढ़ेंगे ए की मात्रा और ए की मात्रा से ही हम आपको ए की मात्रा बनाना सिखाएंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. कलर चेंज करते हैं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए ए की मात्रा वाले शब्द से हम आपको आज ए की मात्रा वाले शब्द बनाना सिखाएंगे. ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए ए की मात्रा. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको हम टॉपिक चेंज करेंगे क्योंकि हमें क्या करना है, ए की मात्रा ए की मात्रा हटाकर हमको क्या करना है, ए की मात्रा लगाना है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, ए की मात्रा लगाकर क्या करना है, सही शब्द बनाना है. ठीक है, यहाँ पे ए की मात्रा लगाकर सही शब्द बनाना है. ठीक है, तो चलिए हम लगाते हैं. आप लोग अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स के जरिए मुझे बताइएगा. ठीक है, हम चेक करेंगे कमेंट बॉक्स में. आप लोग के पास 3-in-1 बुक होगा, ऐसा वाला देखिए 3-in-1 बुक u.k.g स्टूडेंट. आप पेज नंबर आप निकालिए 63. ठीक है, ओपन द बुक, पेज नंबर 63. अब देखिए वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, यहाँ पे हमें
हम क्या करेंगे, ए की मात्रा लगाकर सही शब्द बनाएंगे, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, देखिए इस शब्द में क्या लगा हुआ है, एक ही मात्रा। एक ही मात्रा का मतलब क्या है, एक एक ले। लेकिन यहाँ पे जो शब्द जो लिखा हुआ है एक ही मात्रा, उसमें नहीं लगता। इसमें किस चीज की मात्रा लगाएंगे, क्योंकि क्या पहले देखिए क्वेश्चन बताया गया, एक ही मात्रा लगाकर सही शब्द बनाइए। जो कि ये जो शब्द है क्या है, एक ही मात्रा तो लगा है लेकिन ये शब्द सही नहीं है। इसको हमको अभी क्या करना है, सही बनाना है। चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले तो जो शब्द रहेगा हम वही शब्द लिखेंगे, ठीक है। पहले जो शब्द रहेगा पहले वही शब्द लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, जो शब्द रहेगा पहले हम वही शब्द लिखेंगे। इसमें क्या है, एक एक ले है, ठीक है। बे, लेकिन बे नहीं होता है, क्या होता है, बैल होता है, जिसमें हमें किस चीज की मात्रा लगाना होगा, ए की मात्रा। एक एक ले लगाएंगे तो ये शब्द क्या हो गया, सही बन गया, ठीक है। सही शब्द मतलब जो शब्द दिया गया है ये शब्द गलत है, इसको तो क्या करना है, सही शब्द बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे है बे, ठीक है। तो बे नहीं होता है, क्या होता है, बैग होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो एक ये लगाएंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, बैग। यहाँ पे देखिए मैला, मेला, मेला लिखा हुआ, लेकिन क्या हमको लिखना है, मैला, मैला। मैला मीन्स क्या होता है, मैला। तो यहाँ पे क्या होगा, एक एक ये लगा देते, क्या बन गया, सही शब्द बन गया। यहाँ पे देखिए शेर लिखा हुआ है, जो कि ये क्या है, गलत है। यहाँ पे हमको लिखना है सैड, क्योंकि शेर में ये वाला साउंड नहीं होता है। कौन सा साउंड होता है, तलाबे वाला, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ठेला, ठेला लिखा हुआ, लेकिन हमको क्या शब्द पढ़ना लिखना है, सही शब्द। तो ये क्या हो जाएगा, थैला, क्या हो जाएगा, थैला। क्या है, सब में हमको एक एक और जोड़ना है, ठीक है। तो ये क्या बन गया,
चलिए अब देखिए इसमें क्या करना होगा, कलर चेंज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैदा, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, मैदा, ठीक है। इसमें हम एक जोड़ देंगे, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे गैस, पैन, ठीक है, समझ लिए। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, कमेंट बॉक्स चेक कर लेते हैं एक बार। यस, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए सब लोग ये सब करते हैं, ठीक है। क्रीम वन बुक निकालिए, उसमें पेज नंबर 64 में देखिए क्या करना है, सही शब्द चुनकर वाक्य कीजिए। डैश वो बन गया, क्या बन गया, डैश वो बन गया। इसमें 3 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, भैया, शैतान, डकैत। इसमें से हमको चुनकर लिखना है। अब यहाँ पे देखिए ए की मात्रा 5 शब्द अपनी कॉपी में लिखिए, तो ए की मात्रा हम कल पढ़ाए थे, उसमें से आपको लिख लेना है। अब नीचे दिए गए अक्षरों में ए की मात्रा लगाकर शब्द पूरा करना है, ठीक है। कुछ अक्षर दिया गया है, उसमें आपको क्या करना है, ए की मात्रा लगाना है। पूरा कीजिए, ठीक है, सबको क्या करना है, पूरा कीजिए। यहाँ पे हम कलर चेंज कर देते हैं, ये जब जल्दी नोट कीजिए क्योंकि अगले विषय का भी आपको पता ही हो रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ए की मात्रा लगाना होगा, ठीक है। इसमें भी आपको ए की मात्रा लगाना होगा। इसमें भी आपको क्या लगाना होगा, ए की मात्रा लगा के शब्द पूरा करना है। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 100 पे ए की मात्रा लगाइएगा, इसमें 9 में ए की मात्रा लगाइएगा, इसमें 5 की ए की मात्रा
क्योंकि आपको आगे आगे विषय का भी तैयारी करना है। ठीक है ना। सौ में आई की मात्रा लगाना है, मौ में आई की मात्रा लगाना है, और प में आई की मात्रा लगाना है, ग में आई की मात्रा लगाना है, ग में फिर आई की मात्रा लगाना है, सौ में आई की मात्रा लगाना है। तो ठीक है, जल्दी से कीजिए, नोट डाउन कीजिए। आप तैयार हो जाइए अगले विषय के लिए। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल, अगले दिन मिलते हैं फिर अच्छे विषय के साथ। ठीक है, कुछ अच्छा सा सब्जेक्ट लेकर आएंगे जो कि आप लोग को कल फील कराएंगे। ऐ की मात्रा है तो कल क्या लेंगे, कल किस चीज़ की मात्रा पढ़ना होगा? आप तैयार हो जाइए। अब मैथ टीचर आने का टाइम हो गया है। ठीक है, चलते हैं। धन्यवाद। Good afternoon, my dear students. Now we will start with our math class for UKG. So get ready with your exercise copy and pencil. So get ready with your exercise copy. We will start with our class video, right? So in our last class, what we were doing, we will revise what we were doing in our last class and we will move on to today's class with a new topic. Okay, so in last class we were doing about number, we were doing number name. Right? So, last class, yesterday that was we studied about number name. है ना? कल की क्लास में हमने पढ़ा था नंबर नेम। नंबर नेम क्या है? We will do a quick revision and we will move on to today's topic. Alright? So, number name. What is number name? Number name is a way of writing number using words instead of digit. Alright, this is what we studied in our yesterday's class. So what we studied in yesterday's class was number name. कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? नंबर नेम. So नंबर नेम क्या है? पहले वो उसका डेफिनेशन हमने पढ़ा था, फिर से आज एक बार रिवाइज करेंगे. नंबर नेम इज अ वे ऑफ राइटिंग नंबर यूजिंग वर्ड्स इंस्टेड ऑफ डिजिट. जब भी हम नंबर को वर्ड में लिखते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल, आई गिव यू सर्टेन एग्जांपल्स आल्सो यस्टरडे. लाइक फॉर इंस्टेंस, इफ आई राइट 1, जब नंबर इस तरह से लिखा जाता है तो व्हाट इज दिस? और दिस इज इन अ डिजिट. इसको क्या बोलते हैं आप? डिजिट. बट व्हेन वी राइट 1 एज ONE, इसको हम बोलते हैं वर्ड. वर्ड मतलब शब्द. ऑलराइट, वर्ड मतलब है शब्द. सो whenever we write number as in this, जब सिर्फ नंबर ही लिखते हैं तो वो होता है डिजिट फॉर्म में. ऑलराइट, एंड व्हेन वी राइट द स्पेलिंग और से we write the name of the number, that is in word form. So that is what number name was. So yesterday we tried to understand numbers name is like for example 3. ये 3 डिजिट फॉर्म है. अब इसको नंबर नेम में कैसे लिखेंगे आप? THREE 3. कल हमने ऐसे पढ़ा था ना. सो यही है नंबर नेम. ये नंबर है
ये नंबर है और ये नंबर का नाम है, इसीलिए इसको हम नंबर नेम बोलते हैं। ऑलराइट, नंबर नेम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 3 जो डिजिट है इसका नाम है ये 3। जैसे कि हम सब का भी एक एक नाम होता है ना, वैसे नंबर का भी नाम होता है। दिस 3 इज इन डिजिट फॉर्म। डिजिट मतलब जब सिर्फ नंबर ही लिखा जाता है इसको डिजिट फॉर्म में बोलते हैं। और जब THRE 3 ये एक वर्ड हुआ ना, एक शब्द हुआ, तो इसीलिए in our last class we studied about number name. Alright, so today what we are going to deal is, today we will study about writing numbers. कल हमने writing words पढ़ा था, आज पढ़ेंगे writing numbers. Write in numbers. Write in numbers. So this is the topic for today's class. Write it in your exercise copy. So ये है आज हमारा क्लास का टॉपिक. Alright, write in numbers. So we will study about writing numbers today. So writing numbers क्या है? एक definition की मदद से हम सब पढ़ेंगे. Alright. So what is the definition of writing numbers? We will deal with it. When we write the number using digit instead of word, it is termed as number. Right in number. अब ये definition की मदद से हम सब समझेंगे कि writing number क्या है. Alright, so look at the board everyone. So I have written the definition of number name. So what is the proper definition of number? Number name, when we write the number using digit instead of word. So यहाँ पर digit और word क्या है? What is digit and what is word? ये समझ ले पहले. जब मैंने एक नंबर को ऐसे सिर्फ नंबर की फॉर्म में लिखा है, जैसे 3 को मैंने सिर्फ 3 ऐसे लिखा है, so this number is in digit form. जब सिर्फ हम वो नंबर को लिख दे, that number is in digit form. But also when we write this in different form like THREE 3. Alright, so now we have written it in this way. ये भी 3 है और ये भी 3 है, पर दोनों different forms में. This 3 is in form of digit and this 3 is in form of word. Alright, नंबर को दो तरह से लिख सकते हैं हम, एक होता है डिजिट में, एक होता है वर्ड में. राइट, सो डिजिट फॉर्म में हम नंबर को कैसे लिखते हैं? सिर्फ नंबर जब हमें ऐसे लिखा है 3 को सिर्फ 3 ही लिखा है, दैट इज इन डिजिट फॉर्म. बट व्हेनेवर वी राइट दैट सेम नंबर इन फॉर्म ऑफ वर्ड, दिस इज द फॉर्म ऑफ राइटिंग नंबर इन वर्ड. सो डेफिनेशन क्या बताता है हमको? व्हेन वी राइट द नंबर यूजिंग डिजिट, जब हम नंबर को ऐसे लिखते हैं डिजिट फॉर्म में. ऑलराइट, when we write the number using digit instead of word, word में ना लिखकर, word में ऐसे ना लिखकर जब हम नंबर को सिर्फ डिजिट फॉर्म में लिखते हैं, उसी को हम बोलते हैं राइट इन नंबर. ऑलराइट, क्या बोलते हैं हम उसको? राइट इन नंबर. सो नाउ लेट अस डू सम एक्सरसाइजेस रिगार्डिंग दिस. ऑलराइट, आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर नेम इज क्लियर. राइटिंग वर्ड्स मतलब जब हम
नंबर को ऐसे वर्ड में लिखते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल इन फॉर्म ऑफ स्पेलिंग। ऑलराइट, कल हमने लिखा था नंबर को स्पेलिंग फॉर्म में, दैट वाज राइटिंग वर्ड। एक नंबर को एक वर्ड में लिखना, दैट वाज राइटिंग वर्ड। It was our yesterday's topic. In today's topic, we are going to deal about writing numbers. So today we will write the numbers in form of writing numbers. So let's do some exercise regarding this. Exercise की मदद से आप सबको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या सिखाना चाह रही हूँ आप सबको। Alright? So if I write FIVE 5. Alright, so this number, the thing which I have written, this is in form of word. This is in form of word, and we have to write it in form of digit. Alright, so ये 5 को digit form में कैसे लिखते हैं आप सब कमेंट में लिख कर बताइए मुझे। Write your name, section and the answer. यहाँ पर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए अपना नाम और सेक्शन के साथ। I am waiting for your answers, students. So, how do we write this 5 in form of number name? Number में कैसे लिखते हैं 5 को? Please comment it. I am waiting for your answers. How do we write this 5? This is in word. Now we have to write it in digit. So ये 5 को हम digit form में कैसे लिखते हैं? We will write it as 5 like this. We will write 5 in numbers form like this. 5 ये स्पेलिंग था, ये राइटिंग वर्ड्स था। अब ये राइटिंग नंबर्स है, तो ये 5 को नंबर फॉर्म में आप सिर्फ क्या लिखेंगे? 5 का नंबर। ऑलराइट, प्रतीक, वेरी गुड। Except Pratik, no one is attentive to the class. Yes, in yesterday's class also only he was active and giving answers for all the questions that I was giving. So let us move on to another question. Okay, ये क्वेश्चन का भी आंसर आप सबको कमेंट में लिखना है। यहीं से पता चल जाएगा कि कौन क्लास में एक्टिव है और कौन नहीं। Whenever your school will be open, जब स्कूल खुलेगा ना, तब हम सब क्लास में एक एक को देखेंगे कौन अटेंटिव था या नहीं। यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है सब। This will, how do we write this? 6 in forms of digit हम कैसे लिखते हैं? Please give the answer in the comment box. How do we write 6 in forms of number name? Number name में कैसे लिखते हैं हम 6 को? How do we write 6 in forms of number? I am waiting for your answers. Very good. It is written like this. We write 6 as this. Alright? Very good. Now also only Pratik is giving me the answers. Now the next question is. Next question is. T-E-N-10. So, how do we write 10 in forms of number? How do we write it? We write it as 1, 0, 10. 1, 0, 10. ये भी 10 और ये भी 10. Right? Both numbers are same. But the way of writing is different. We are writing it in forms of word. And we are writing it in form of number. So ये writing words and writing numbers ये दोनों में आप सबको confuse नहीं होना है। जब क्वेश्चन आपसे पूछेगा write in number,
राइट इन नंबर। ये क्वेश्चन में जब नंबर दिखाई दे रहा है आप सबको राइट इन नंबर, तो आप सबको नंबर फॉर्म में लिखना है, जैसे 1 2 10 40 100 ऐसे। ऑलराइट, whenever it is the question asks you to write in number, तो हम लिखेंगे नंबर की फॉर्म में। और जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा राइट इन word, whenever the question asks us to write in word, we will write the same numbers in form of words, like we will write it as O-N-E 1, T-W-O 2, F-I-V-E 5, T-E-N 10. We write numbers in forms of word. So this is how writing numbers and writing number and writing words are done. All right. So we will do some more exercises. Sorry. What will be the answer to this? How do we write the number name over here? I have written the words. T-W-E-N-T-Y is 20. Alright? So how do we write this 20 in form of number? How do we write it? We will write it as 20. Alright, we will write it as 20. And how do we write this number in form of number? Writing numbers form. Let me give you. Alright, so the first I have written it in form of word. But today we are dealing with writing number. So how do we write the word of 56 in terms of number? We write it as 5, 6, 56. 56 को नंबर फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम सब? 5 and 6. Alright? So जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। राइट इन नंबर जब आपको दिखाई देगा लाइक दिस, राइट इन नंबर, सो क्वेश्चन से ही समझ में आ ही जाता है कि आप सबको क्या लिखना है, सिर्फ नंबर लिखना है। और वर्ड मतलब आप सब समझिए, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टर्म वर्ड विद स्पेलिंग। ऑलराइट, राइटिंग वर्ड मतलब आप सब स्पेलिंग ही समझ लीजिए, जब भी एक वर्ड मिलेगा उसका स्पेलिंग लिख देना है। ऑलराइट, so you are not to be confused with writing numbers and writing words. Alright, so with this I end my class here. You all are requested to do the revision of these chapters in your home. Yesterday we studied about numbers name. Today we studied about writing words. Today we studied about writing numbers. जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है, you all are requested to just revise it at your home. Alright. Now, this is the end of your classes. Thank you.